हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था वेरियस फाइलम्स इन चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं आज लास्ट टॉपिक इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर। क्या है ये नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को नाम देना इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमारा नाम देते हैं, कोई नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को नाम देना, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। Who is father of nomenclature? किसने सबसे पहले नाम देने शुरू किए प्लांट्स और एनिमल्स को? साइंटिस्ट कैरोलस लिनॉयस। मैंने पहले भी बताया, ही इज ऑल्सो अ फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनॉयस, he is a father of classification, or he has given scientific names to organisms also. The nomenclature of living organism is called binomial nomenclature. तो क्या है ये binomial nomenclature? Binomial nomenclature. Bi means two, nomial nomenclature. हर प्लांट, हर एनिमल, इवन हर ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं जीनस और जेनेरिक नेम, एक को बोलते हैं स्पीशीज और स्पेसिफिक नेम। जीनस एंड अदर इज स्पीशीज। और इस तरह का नॉमेनक्लेचर जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, जीनस एंड स्पीशीज, उस तरह की नेमिंग को बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी, वेदर प्लांट और एनिमल, साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म consists of two components, genus and species. Scientific name of every organism consists of two components, genus and species. This type of naming is called by means two, binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? Scientific name of every organism consists of two components, genus and species. This type of naming is called binomial nomenclature. Next is, what is the need of this nomenclature? क्या जरूरत है हर ऑर्गेनिज्म को नाम देने की? हर ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम, कॉमन नेम तो हर में है। जैसे हम अनियन को बोलते हैं प्याज, लेकिन आप सोचो, अनियन, प्याज, हर, इवन इंडिया में ही हर स्टेट में उसको अलग अलग कहा जाता है। पंजाबी में उसको गंडा कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसको कांदा कहा जाता है। तो अगर दूसरी कंट्री के लोग इकट्ठे हो गए और वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलने लगे, उसकी, हम तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्याज के बारे में बात कर रहे हैं, अनियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। तो अगर वो कोई उसके कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कैसे वो उगता है, उसके बारे में दूसरी कंट्रीज को भी बताना हो, किसी ने कोई रिसर्च की हो, दूसरी कंट्रीज को बताना हो, तो एक ऐसा नाम हो जो सबको पता हो, तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द नीड of giving
scientific names to organisms. What is the need of giving scientific names to organisms? What is the need of giving scientific names to organism? हाँ जी, क्या जरूरत है? फॉर करेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, ठीक से कम्युनिकेट कर सके, स्पेशली साइंटिस्ट, स्पेशली पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, फॉर करेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, फॉर करेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, especially scientists, it is necessary to give scientific names to organisms. For correct communication between people, especially scientists, it is necessary to give scientific names. Second, local names are not understood everywhere. Local names are not understood everywhere. Local names are not understood everywhere. Next is, there are certain points, certain rules of writing this nomenclature. First of all, I'll tell you the names of few organisms. For example, human beings are called Homo sapiens. Scientific name of human beings is Homo sapiens. Genus is Homo. Species is sapiens. Homo sapiens. P. P is called Pisum stivum. I am telling you, every organism has scientific name. I have given two examples. Homo sapiens, Pisum stivum. This is P, matter. What are the rules of writing this nomenclature, or it is also said, what are the conventions? Conventions, पूरा question 2 marks का आता है. What are the conventions followed, conventions used to write nomenclature? Conventions used to write nomenclature. First rule, first convention is a genus name should be started with capital and species name should be started with small letter. The first letter of genus should be capital, first letter, or the whole of the species should be in small letters. Like if we have to write Homo sapiens, first convention is first letter of genus should be capital, and first letter of species should be small, should not be capital. Second convention, when handwritten, like I am writing, when handwritten they should be separately underlined. When handwritten they should be separately underlined. They should be separately underlined. Next convention is when printed, when they are in book, when printed, they should be written in italics. You have seen italics, टेढ़ा टेढ़ा लिखा होता है. So when
printed, they should be written in italics. When printed, they should be written in italics. When printed, they should be written in italics. So these are the conventions used to write scientific names. Like if scientific name of human beings is Homo sapiens, H should be capital, S should be small. They should be separately underlined. Next, I'll be giving scientific name of few organisms because it comes in the examination. Few most common scientific names of organisms. So we have done what is nomenclature, who has given nomenclature, Carolus Linnaeus. Then we have done what is binomial nomenclature, then what is the need of giving scientific names to organism. Now we have done conventions or rules used to write scientific names. Next we'll be doing scientific name of few organisms like potato. First is potato. Scientific name of potato is Solanum tuberosum. Solanum tuberosum is a scientific name of potato. Second is tiger. Panthera tigris is a scientific name of tiger. Panthera tigris. Next is peacock. Scientific name of peacock is Pavo cristatus. Peacock. Pavo cristatus. Scientific name of neem is Melia indica. Scientific name of neem is Melia indica. We have done scientific name of human beings is Homo sapiens. Scientific name of pea is mutton is Pisum stivum. Scientific name of a cockroach is Periplaneta americana. Scientific name of cockroach is Periplaneta americana. Scientific name of earthworm is Ferretima postuma. postuma. ऐसे बहुत सारे हैं पर हमने सारे नहीं करने. These are some important, will be doing it, और इन्हीं में से ही ज़्यादातर आते हैं. So these are the scientific name of few organisms. This you have to remember. So these are the 4 or 5 topics of this, subtopics of this topic, nomenclature. What is nomenclature? Science of giving names to organism is called nomenclature. What is binomial nomenclature? Scientific name of every organism consists of 2 components, genus and species. This is called
binomial nomenclature. What is the need of nomenclature or binomial nomenclature? Because local names are not understood everywhere. For correct communication between people, especially scientists, scientific names are given. What are the rules, conventions used to write scientific names? We have done 4. First letter of the genus should be capital, first letter of the species should be small. Next is, when handwritten, they should be separately underlined. When printed, they should be written in italics. Next convention. Next question, write the scientific name of earthworm, cockroach, pea, human beings, tiger, peacock, neem, lion, that is Panthera leo. So, like this, there are scientific names of every organisms. So, by this we have completed the chapter Diversity in Living Organism. In the next lecture, we'll be doing another chapter, Why Do We